Hello and welcome to a brand new episode of ET Markets Trade Talk, a show where we talk about trading strategy, market outlook, as well as risk management practices. Now, my name is Shatajana, and today we have with us a very special guest, Rajesh Sriwastava, who's a Bangalore-based seasoned trader with over 20 years of experience. Now, he consults retailers on a global level and has a knack for data-driven trading strategy. Let me invite the man himself. Welcome to the show, Rajesh. Thank you, sir. It's an honor to be on your show, and that was the maiden first episode. So, really privileged. Thank you, sir. Thank you for your kind words, Rajesh. Now, let me come to the first question. First, I want to get your view on the tweaks which were brought in by the finance minister, earlier, especially with respect to the options trade. Now that you are one person who tracks options trading in and out. Now, is it a situation or is it a cautious stance, you could say, that taken by the government? What are your views on that as well? Sir, I'm sure you're asking about the new taxes or the increased taxes around that. That's right. Hanji sir, yes. Sir, there are two things to it. One, see, this government tax planning is purely their prerogative. We have to live with that. Okay? तो आप अगर सिगरेट अल्कोहल देखो तो टैक्स तो बढ़ते रहते हैं, हर साल थोड़े बढ़ते हैं, एंड कंजम्पशन में कोई असर नहीं पड़ता है. सो ट्रेडर्स को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला है. बट सर देन इफ यू आस्क मी एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर वेयर द ऑप्शन ट्रेडिंग इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस, we definitely have to push ourselves to get that, like say there was a certain return we were generating. Now a pie of that will go into new tax thing, so we have to push ourselves to get that thing fill in. And then the way market is behaving over the last say 1 month or a little longer than 1 month, right. I think the time to everybody to go back to the drawing board, whether market behave or not, then you have to factor in these charges. So trader को तो revisit करना ही है drawing board. Absolutely. Now, let me also come to the part wherein we want to discuss one of your trading strategy for our viewers, and the stage is all yours. So, if you can discuss any trading strategy which could, in fact, retail investors or options traders can use on a daily basis. Yes, sir, definitely. I'm sure a lot of our viewers are active traders. Absolutely. So they will definitely look for something which they can implement immediately after our discussion, after spending some time with us. See, here it is. Everyone is speak, whether he is new to the market or 10 years into the market or 30 years into the market, he will have one or other strategies. Right. Majority of the people I interact with, I see, they have technical indicators and other trading strategies. What is important for us to understand, the market has changed over the last 20 years. Like what it was in 2004 or 5, and it is not the same like in 2024. ठीक है, अभी चीजें बहुत तेजी से होती हैं. Like if there is a pattern, the fall has to come. Earlier the 10% fall used to come in like over a period of a month. Now आप fall or everything is done. So things have changed. We have to react faster, and then also we have to keep in mind that most of the indicators or patterns are only after the price move happens. You actually don't anticipate. I mean, there are patterns where we can anticipate, projected price move, but then anticipation से तो बाजार नहीं चल सकता, हम पैसे नहीं बना सकते. तो अभी for our viewers, if they are looking for a strategy, so my first piece to them, let's start tracking the market, not from the price perspective, from the positioning perspective. एक चीज, जिस दिन से मैं बाजार में हूँ, मैं जिन्होंने मुझे सिखाया था, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर थे, उन्होंने मुझे बाजार सिखाया, तो उन्होंने एक बात पहले दिन भी कहा और अब भी उनसे मेरी बात होती है, तो he speaks like unless the institutional holdings are in place, you don't see a price move. Right. So biggies create their position much before their the price move starts. Maybe they have a better resource, they have a better software, they have better talented people to predict the price move. But whatsoever is the case, they first create their position. Okay, let's not be under the impression that they have insider info. They have better mechanism to
predict the price. It Right. is Right. through the analysis or different things. Now, how can we trace the price move? Okay. So one thing I wanted to tell every trader, and then I want you to just hard code on your thought process. If I tell you today Tata Steel is a bearish setup now, Tata Steel is getting into a bearish mode, okay, a bearish projection. So you have just 4 option or way to create a position. You can either sell a future, you can sell a call, you can buy a put, और थोड़े डीमेट से या SLBM mechanism के थ्रू आप एक बेरिश ट्रेड खड़ा कर सकते हो. Option trader can have non-directional strategies, so वो totally different. But then if you have to create a bearish position, there are just 4 ways. There is no 5th way. Right. ठीक है? Either sell a future, either you sell a call, buy a put, or SLBM या डीमेट अकाउंट से कैश मार्केट. तो अब when we decided that things are moving faster, we have to keep our radar at positioning stage rather than the price thing. So, see, these are the 4 points where if our radars are there. So simple करना है. Keep a radar on the future market, one radar on the option market, one radar on the cash market. Wherever there is a more than normal or abnormal activity, we have to immediately shift our attention there. So to say, let me take a real example from like the day when we close Friday. Okay, I'm going to share my screen and sure. Okay, so Friday when we closed, everything was normal, and even today everything is normal. But then what happened Friday? One thing we have to be clear on our thought process, that what we are talking today, it is not a trade recommendation. We are just talking a process, methodology. Absolutely. Okay? Absolutely. So if you Absolutely. No, in fact, ये एक disclaimer भी है सबके लिए कि अगर कोई भी stock हम discuss करें तो वो purely educational purposes के लिए है, और this is not a trade recommendation by any means. That's a blanket disclaimer from our side as well. मैं फ्राइडे का सारे स्टॉक्स का डेटा एक स्क्रीन पे लाता हूँ. तो जैसे हमने कहा कि वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द 4 डेटा पॉइंट्स. फ्यूचर में क्या हो रहा है, ऑप्शन में क्या हो रहा है, ऑप्शन में कॉल और पुट, एंड देन कैश मार्केट में. ठीक है. अभी इसके बारे में हम बात करेंगे. हम एक रडार चारों मार्केट पे लगा देंगे जहां भी आउट ऑफ एबनॉर्मल एक्टिविटी रहेगा, उसको हम ट्रेस करेंगे और हम बातें करेंगे. बट देन उसके पहले एक बार बता दूं मैं आपको, और ये बहुत जरूरी है. इसलिए जरूरी है कि जैसे हमने कहा, lot of people I interact with, everyone has a strategy. Every single person on this trading community have a strategy. And I strongly want to draw your attention here. See, any strategy you follow, quantitative methodology, technical analysis, fundamental analysis, see, you will get both kind of trade. You will get a long trade, you will get a short trade. Short trade, right. But remember one thing, market or the stock, like 3 out of the 4 stock follow the market trend. तो सपोज अभी हम एक सीरियस स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में है, या अप ट्रेंड बोल सकते हो मार्केट में है, और मेरे मेथोडोलॉजी एक बेरिश ट्रेड आता है, what my probabilities of making that trade is just 1 out of the 4 times. So like 25% probability से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ अपना ट्रेड. तो हमारा जो भी मेथोडोलॉजी है, it has to be aligned with the market trend. ठीक है? Okay, and so let's say I'm not calling out it is a bearish market, but let's say we are not into an uptrend market and we have some challenges. Actually, we have fallen good 1,000 points from the high, but Absolutely, then I'm trying to refrain calling out is that a breakdown kind of or a downtrend kind of. Okay? And there are many regions, a lot of changes takes place on the year end, like we are heading to a year end. Financial year end. Yeah, so a lot of changes, churn happens and a lot of things happen. So okay. So yeah, we are 1,000 points down from the top currently, and it is more than 1,000 points. So we are not into uptrend for sure, and then we definitely we would not look for a long trade. So अपना जो भी मेथोडोलॉजी है, at this market situation scenarios, we have to find a short trade. अभी short trade में क्या हो सकता है? फ्यूचर में जहां शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं, या ऑप्शन में जहां बेयरिश पोजीशन क्रिएट हो रहे हैं.
अच्छा, option में bearish position, if you were to see how the bearish positions are getting created, there are two ways: either you sell call or buy put. Okay. So today we will see how can we keep a radar on this option market. Okay, because option is is kind of a driver nowadays. Okay, you get a lot of early indications, a lot of early data points in the option market, much before you really start to see price move. Right. So मैंने Friday के सारे stocks so this I prepared Friday night. Yesterday I was not here in Bangalore. So this Friday we will see current data as well. Data निकाल लिया है. What data we have prepared? It's a very basic data, and you don't need to have a very sophisticated system in place to practice this strategy. Okay? Right. So what we have done, we have taken just let's see the first 3 points. A future open interest data. So what is open interest? So a derivative trade is somewhat different than the non-derivative, the obvious thing. The biggest difference is non-derivative mein, if I buy something, even my grandson can sell. There is no compulsion for me to sell that by a given date. Derivative mein, there is a compulsion Thursday of the week for the weekly expiries and the month for the monthly expiries options or the future. Absolutely. Okay. So now coming back to my topic of open interest. So whatever trade we have initiated, long or short, that has to be mandatorily closed by the expiry date. Achha, there are some more calculations goes behind that is for a beginner or for a not a very large side trader, that is a separate thing. But then so जितने भी ट्रेड ओपन है जो क्लोज नहीं हुए हैं, बेसिकली डेरिवेटिव ट्रेड में 2 लेग ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं. आपने बाई किया तो सेल करना है, सेल किया तो बाई करना है. बिल्कुल. जब तक वो ट्रेड ओपन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओपन इंटरेस्ट. ठीक है. तो अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये करंट कितने ट्रेड ओपन है. एक बात याद रखना, ये मार्केट करंट सेंटीमेंट से चलता है. वी रिएक्ट टू द करंट सेंटीमेंट. वी डोंट रिएक्ट व्हाट हैपेंड 5 years back, 5 months back, 5 weeks back, even 5 days back. Right. So our focus should not be on the open interest. Why I'm telling focus should not be on the open interest? See, these contracts were available to trade 3 months before the expiry. Even we're talking today on 20th March. We can still trade April, May, and June series. Yes. So suppose if I've created a trade in the June series, it will still add an open interest quantity there. But if you are watching that end of the June, you don't even recall what was the situation, what position I would have created, long banaya tha, short banaya tha. It would be difficult to really wake up. Difficult, yeah. And see, market from the current sentiment. So we have to track what is happening today. तो अगर आप कल फ्राइडे की बात करें तो रिलायंस में 5,175 लॉट्स ऑफ OI got added. Right. ठीक है. OI everybody tracks. I know a lot of websites provide this data. A lot of paid softwares provide this data. One thing I wanted to tell you, it is always prudent to track open interest on the number of lot. Okay. Number of lots. Okay. Never ever track open interest on a percentage basis. I'll show you one example. Okay. Let's see. So Metropolis. See, if you are tracking it on, so this is percentage, this is lot. Percentage basis, 11%, and this is the highest OI change in terms of percentage on Friday. Okay. और lot change सिर्फ 284 है. This is ये तो 284 lot. A guy sitting in a Malad office could have created this position. Like 22 का होगा. Okay. Right. Yeah. So we cannot say that is a very trending stock and everybody is really, remember one thing, my experience, my learning, for an F&O trader, not about the cash market, F&O trader, what we need movement, volatility. अगर हम F&O trade में सौदे लगा के बैठे हैं, stock move नहीं कर रहा, पैसे नहीं आएंगे. It was happening with ITC and all just 2 years back. So we need kind of directional volatility. I mean, see, अभी जैसे बाजार है ये नॉन डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी है, नो डायरेक्शन ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी. बट इफ यू हैव अ व्यू ऑन रिलायंस और मेट्रोपोलिस, आई नीड टू हैव अ डायरेक्शनल वॉलेटिलिटी. 284 lot is not enough to create a budge into the market. And see, it's simple.
out of 24, I'm sure a guy sitting in a very small brokerage firm, any corner of Mumbai, or even forget about Mumbai big city, a corner of Udupi district in Karnataka would have created 5-6 lot. So I won't say ki 284 is a big number, and then we should actually go gaga about this. So let's see which stock has the highest position built, because each lot अगर आप देखो तो 2.5 लाख रुपए के एवरेज पे if it is unhedged मार्जिन लगती है. Now you see, let's see this VDL 1900 lot. So you multiply by 2.5 lakh. Look at the money riding onto this. Money riding, yes, absolutely. Now another thing I wanted to draw everyone's attention. You may say, okay, look, Reliance has done a highest number of trade on Friday. Definitely something big going to happen on the Reliance. But remember one thing, ये daily उतना lot करता है. Right. So the first thing we have to go by the historical, by history. क्या large numbers of trade getting created, but then that has to be gauged against an average size of for the day. अगर आप देखो तो Reliance 5,000 और any given day करता है. तो मैं नहीं बोलूंगा कि यार रिलायंस में तो लोग एकदम चढ़ के सौदे लगा रहे हैं. ठीक है, बट देन इफ यू सी दिस टाटा स्टील 1500 लॉट इज लिटिल abnormal. 300-400 लॉट का काम होता है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ नॉर्मल ट्रेड साइज, बिकॉज पैसे तभी आएंगे जब बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोग उस स्टॉक के पीछे पड़े हैं, या तो बेचने में या खरीदने में. 4 लोगों से तो पैसे नहीं ला सकते हैं. So, जब भी नॉर्मल से ज्यादा एक्टिविटी दिख रही हो बाजार में, तो दैट इज द टाइम व्हेन एटलीस्ट वो फिल्टर के लिए स्टॉक्स जो है वो यूज कर सकते हैं कि एज अ फिल्ट्रेशन. हाँ सर, तो वो पहला साइन है कि दिस इज अ बिगेस्ट पोजीशन. बिगी तो 200 लॉट का पोजीशन नहीं लगाया, जैसे हम लोगों ने पाया. आई मीन वो तो 200 लॉट का या 400 लॉट का पोजीशन नहीं लगाएगा. हाँ, है ना, उनका तो पोजीशन बड़ा होता है. बट देन अगेन अनदर थिंग इज कि कितना बड़ा होता है. Right. So Reliance, we found it like Reliance did the highest number of lots, but then see Reliance do it every day, 5,000 lot. So then we have to find the one which has an outlier. तो सर यहाँ पर 2 वर्ड और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा. You have to focus on outliers, okay? Right. And तो अगर पूरे जी को स्ट्रैटेजी को एक नाम देना हो, एक बड़ा अच्छा नाम से रैप करना हो, सो आई विल नेम इट डिटेक्ट एंड डिकोड आउटलायर्स. ओके, क्योंकि सी इट्स वेरी सिंपल. हमें ये पता करना कि कौन से स्टॉक में बड़ा काम हो रहा है, हमारे बड़े लोग वहां पे पोजीशन कर रहे हैं. राइट. और उसको डिकोड कर लेना है वो लॉन्ग कर रहे हैं. ठीक है, ओके. नाउ तो जैसे हमने कहा कि ऑप्शन, तो ये हम फ्यूचर की बात कर रहे थे. फिलहाल ऑप्शन पे हमारा फोकस है, तो मैं आपको समझाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए या फिर आउटलायर कॉन्सेप्ट समझाने के लिए फ्यूचर पे 2 मिनट के लिए ठहरा था. अब आते हैं ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस. अभी हम आउटलायर की बात करते हैं, ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं, फ्यूचर और एबनॉर्मल पोजीशन साइज की बात करते हैं. देखो ऑप्शंस थोड़े से it is different than future, because see option में there are multiple strikes for a stock and every strikes have a open interest. So आपके लिए वो एक चैलेंजिंग हो जाता है कि यार कौन सा स्ट्राइक देखूं मैं, एट द मनी देखूं, आउट ऑफ द देखूं. तो the best way to do this is to you aggregate the entire option chain. Okay, I'll just put a page here. I'm just going to put a NSE page और बातें कर रहे थे कि वहाँ बड़ा पोजीशन दिख रहा था बनता हुआ. तो हमें करना क्या है, सी ये बाय डिफॉल्ट एग्रीगेटेड आ रहा है. ओपन इंटरेस्ट वी आर गेटिंग इट बाय डिफॉल्ट बाय द NSE, बाय डिफॉल्ट वी गेट इट. So even if you ask me at this point, put has just 10,000, call has just 19,000. Actually, this itself is a imbalance. आप देखो, we are just 1 day to expiry, and still we have serious imbalance. Put side has more. So this is not the method we are going to talk. So our idea is to aggregate the entire option chain and cumulative OI देखना है.
ठीक है। बट देन Cumulative. जैसे हमने पहले थी फ्यूचर का ओआई नहीं, ऑप्शन का ओआई चेंज पे फोकस नहीं होना है, फोकस शुड बी ऑन चेंज ऑफ द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम अपने अपने शीट पे आते हैं, तो लॉट चेंज इन द ऑन द ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरीली हमारा फोकस क्या है, हम बेरिश ट्रेड ढूंढे, बुलिश ट्रेड इस बाजार में ढूंढना है, तो हम ढूंढेंगे कहाँ पर ज्यादा कॉल में एक्टिविटी हो रहा है। अच्छा सर देखो, देखिए क्या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। सी मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूँ ऑप्शन के बारे में, तो 9 लोगों का अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है ऑप्शन में तो वो सेलिंग ही हो रहा है। अपने को याद रखना है ये ऑलवेज सेलिंग नहीं। जैसे अभी आप देखो रिलायंस में या फिर वीडीएल में कॉल में 2200 लॉट्स के पोजीशंस बने हैं, एंड अंडर ब्लैंकेट इंप्रेशन की इज सेलिंग योर, पॉसिबली इट कुड बी बाइंग, राइट, ठीक है। तो अपना पहला काम क्या है, डिटेक्ट करना है कहाँ पे एनोमली है, दूसरा काम है डिकोड करना है वो बाइंग है या सेलिंग है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके रेशियो पे करता हूँ। क्यों करता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सर ये टाटा स्टील की बात करते हैं, आप अगर देखो तो फ्राइडे का जब बाजार बंद हो रहा था तो कॉल के साइड में 2078 लॉट का काम हो गया था, ठीक है। बट जब मैं अपोजिट साइड देखूं, अच्छा ये एग्रीगेटेड लेवल की बात कर रहा हूं मैं, राइट, तो सिर्फ ये 106 लॉट का काम हुआ है, 106। नाउ द पॉइंट हियर इज, see this is a serious imbalance. This is a serious imbalance. See, if it is a buying call side of the buying, then the bulls are trying their hand. जैसा हमने कहा कि biggies have just, anyone have just 4 way to create a position into the market. ठीक बात है ना। तो अगर वो कोई बुलिश ट्रेड कर रहा तो हो सकता है कॉल बाय कर रहा हो, अगर कोई बेरिश ट्रेड कर रहा तो हो सकता है कॉल बेच रहा होगा, कॉल सेलिंग कर रहा होगा। So we got at least one thing here कि someone is creating a real big position into Tata Steel, because you see this balance is too serious. All we have to do is to decode this, ये buying है या selling है। If our system, our mechanism tells us कि Tata Steel is getting sold, the calls are getting sold, it is a bearish trade, ठीक है। If our mechanism tells us it is getting bought, तो ये bullish trade है। So डिटेक्ट करने का आता है, पहले डिटेक्ट करो कहाँ पे एनोमलीज है मार्केट में, कहाँ पे एबनॉर्मल साइज ऑफ द पोजीशन हो रहे हैं। सी आई डोंट सी अ बेटर एग्जांपल देन दिस, है ना, ठीक बात, राइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक दिन का मैं और चलो इसकी बातें कर लेते हैं पहले फिर। तो अब हमारे पास डिटेक्शन तो बहुत इजी हो गया, हमने सारे और ये डेटा बनाना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, भाव कॉपी से हम डाउनलोड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और आई थिंक अपने ईटी के वेबसाइट पे भी बहुत सारा ऑप्शन डेटा है, तो आई थिंक पीपल कैन मेक यूज ऑफ दैट, ठीक है। तो ये एक है, पहले डेटा बना लिया, वी हैव काइंड ऑफ डिटेक्टेड the stock or the positions which is really getting built at this point of time by the biggers. Sir, यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है, बहुत अच्छे चार्टिस्ट मैं जानता हूँ, उनसे अगर आप बात तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि वो कहते हैं कि I have a big challenge putting the stock onto the chart. If I know the stock, I can do wonder there, like कहाँ पे stop loss लगाना है, कहाँ पे buy. So if you don't want to follow our option mechanism to trade, fair enough. You can use this zero to the stock. ठीक बात, right. अभी अगर आपने ये यूज किया, आप एक कंक्लूजन पा जाओ कि टाटा स्टील की कॉल में सेलिंग हो रही है, बेरिश मोड है, you can actually trade future, you can trade cash market, or you can take this stock to your technical analytical whatever mechanism you have, and then further analysis आप उसमें कर लो। तो आपका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि how to zero down to the stock, this method will solve you, okay? Even you can make further trade into that, but then I'm just trying to tell you one more benefit of this method, ठीक है। तो अभी हमें को पता है कि
टाटा स्टील में बड़े पोजीशन बन रहे हैं, बड़े एबनॉर्मल पोजीशन बन रहे हैं, अब हमें सब डिकोड कर लेना है। जैसे हमने 2-3 मिनट पहले 5 मिनट पहले की बात की थी, मेजॉरिटी पीपल गो बाय द असम्पशन। अभी हमने सिर्फ यही डिकोड किया है कि कॉल ऑप्शंस के अंदर काम हो रहा है और पुट ऑप्शंस के अंदर उतना काम नहीं हो रहा, तो देयर इज सम इम्बैलेंस। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि ये बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो ये बाइंग और हो रही है, सेलिंग हो रही है, ये कैसे पता लगाना है? जी सर, मैं बताता हूँ। हमने डिटेक्ट कर लिया है कि कहाँ पे इम्बैलेंस है या कहाँ पे बड़ा सौदा खड़ा हो रहा है। ठीक है, भाव आ जाएगा। अभी मैंने पहले पोजीशन बनते थे, भाव आते लोगों के, प्राइस। ठीक है। अब ये पता लगाने के लिए ना एक ऑप्शन के, अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हो या नहीं भी तो मैं बताता हूँ, हम आईवी के थ्रू ट्रेस करते हैं। आईवी एक ऑप्शन का वोलेटिलिटी का एक गेज है। ओके। आईवी बताता है कि इस ऑप्शन में कितना एंटीसिपेटेड वोलेटिलिटी। ठीक है। नाउ सर, अभी मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, उस एग्जांपल को ड्रॉ करेंगे, ट्राई टू कनेक्ट दिस विद दिस। सी, अभी अपन लोग ऐसे बात कर रहे हैं और सडनली एक न्यूज़ फ्लैश करे टीवी पे या वेबसाइट्स पे कि पीएम इज गोइंग टू एड्रेस द नेशन बाय 8 PM टुडे। राइट। ओके, so there will be two things a trader will think. Either the PM will come and declare another round of demonetization, or he can declare another round of stimulus package. तो एक सिनेरियो में हम बहुत बुरी तरह गिर हैं, दूसरे सिनेरियो में हम बहुत बुरी तरह ऊपर जा, माने बहुत अच्छी तरह उसके ऊपर भाग सकते हैं। बट देन इस पे क्या होगा कि एक ट्रेडर का नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, वो जल्दी से जाएगा 300-400 पॉइंट ऊपर का निफ्टी का कॉल कर देगा, 400 पॉइंट नीचे का पुट कर देगा। जब हम ये करते हैं तो वो सिस्टम को इनपुट देता है कि देखो लोग बहुत डेस्परेट हैं, मार्केट रेट पे कॉल खरीद रहे हैं, 400 पॉइंट ऊपर कॉल खरीद रहे हैं, वो आईबी को हेल्प करता है। तो अपने को क्या करना है कि पता करना है कि इसका आईबी के लेवल्स क्या है। ठीक है, अगर आईबी एलिवेटेड है तो उसका एक चीज है कि स्टॉक में वोलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है, और यहाँ पर ही हमारा डिसीजन मेकिंग आता है। सर, एक ऑप्शन राइटर को वोलेटिलिटी पसंद नहीं होता। अगर वोलेटिलिटी है तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो उस ऑप्शन राइटर को मैं भी काफी ऑप्शन राइटिंग करता हूँ। मुझे काम वाटर चाहिए होता है, मैं आई डोंट वांट टू प्ले अराउंड द मडी वाटर। राइट। ठीक है, तो अगर वोलेटिलिटी तो ऑप्शन राइटर क्यों अपने आप को मुसीबत में डालेगा? तो हम वहां पर वोलेटिलिटी गेज करेंगे। अगर वोलेटिलिटी बहुत मिनिमम है तो we will decode this as an option selling. If the volatility is elevated level, we will say this is an option buying. ठीक है? अच्छा, वहां पे volatility गेज करने के 2 तरीके हैं। अभी आप अगर एक नॉर्मल निफ्टी के ऑप्शन चेन पे जाओगे तो इस पे आईवी आता है। ठीक है, ये आईवी का ये सर, ये वाला, ये कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो अब तो क्या करना है, आईपी हिस्टोरिकल देखना होता है। ठीक है, क्योंकि 37 का आईपी ज्यादा है कम नहीं पता है। हो सकता है कि 5 वीक पहले ये 50 का रहा हो, माने एटीएम का भी 50 रहा हो, 100 रहा हो, या 5 वीक पहले 10 रहा हो। अगर 10 रहा है तो ये एलिवेटेड हो रहा है, और 50 रहा तो भैया शांति का माहौल है यहाँ पे। ठीक है, तो आईवी हिस्टोरिकल लिखने को आईवी परसेंटाइल से हम उसको ट्रेस से ट्रैक कर लेते हैं। आज का जो आईवी है ना, वो एटीएम पे जो आईवी है, जैसे ये टाटा स्टील का एटीएम का पिछले 250 दिन, 51 दिन, 52 दिन जितने भी ट्रेडिंग दे रहे हो एक साल में, उतने दिन का हाईएस्ट टू लोवेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि पिछले 252 दिन में एटीएम का आईवी 100 रहा हो तो वो हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद इसे वो प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, जो हाईएस्ट आईवी है वो 100 परसेंटाइल कहलाएगा, सेकंड हाईएस्ट 99 परसेंटाइल, थर्ड हाईएस्ट 98 परसेंटाइल कहलाएगा। ओके, ठीक है, तो आईवी को हम प्लॉट कर लेंगे परसेंटाइल मॉडल पे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मुझे एक साल का आइडिया मिले कि एक साल में ये कहाँ रहा है, आज एलिवेटेड है कंपेयर टू द लास्ट 1 ईयर ट्रेडिंग ईयर्स, और इट्स नॉर्मल लेवल। तो अगर टाटा स्टील की बात करें, सर ये देखिए, एक्चुअली इसका आईवी अच्छा, एनीवे वी आर हेडिंग टू एक्सपायरी, बट देन अगर हम 26 तारीख की बात करें, 26 तारीख तक क्यों नहीं है? ओके, साइज और
ओके 24 की बात है, काफी मैंने सी 22 परसेंटाइल था। मैंने जो करंट आईवी है, इफ आई प्लॉट इट ऑन अ 1 ईयर बेसिस, इट इज नॉट वेरी एलिवेटेड, इवन टुडे आई वुड से वेरी एलिवेटेड। ओके, तो एक थंब रूल हम प्रैक्टिस करते हैं, यू कैन हैव अ बेटर थंब रूल, इफ देन आईवीज आर एलिवेटेड मोर देन 90, we see the stock is anticipated for a bigger movement and then we don't go for option selling, और ना ही हम डेटा को ऑप्शन सेलिंग के रूप में देखते हैं। ठीक है, आपने बोला 9090 या 1990? 9090। तो आप लाइक टॉप 10 वोलेटाइल एंटिसिपेशन के बीच में हो, है ना, वो तो थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल है भी ना। वो एलिवेटेड मैं लेवल ऑप्शन सेलर हूं और मैं एलिवेटेड है, क्यों मैं ऑप्शन बेचने जाऊं, मुसीबत में पड़ सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर आईवी बहुत एलिवेटेड है, तो बहुत एलिवेटेड मतलब बोलने का मतलब 90 के ऊपर है, तो वो डोंट एंटिसिपेट और डोंट कंक्लूड दैट ऑप्शन सेलिंग एज अ ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट एज अ सेलिंग। इफ इट इज एलिवेटेड यू टेक इट एज अ बाइंग। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि अगर आप पिछला 3-4 दिन का देखें आईवी, अगर बहुत तेजी में बढ़ रहा, 30 था, 35 हुआ, 40, 45, 50, तो वहां पर बाइंग हो रहा होता है। ठीक है, तो टाटा स्टील के केस में तो आई थिंक 20 का आईवी परसेंटाइल है। तो अपने व्यूअर्स को मैं दोबारा बताना चाहूंगा, आईवी अगर आपने गेज करना है तो जो ऑप्शन चेन मारता है उसके पीछे मत जाना। एंड आईवी ऑफ 100 कैन बी लेसर एंड आईवी ऑफ 20 कैन बी हायर। अपने को आईवी परसेंटाइल देखना है कि आज जो एटीएफ आईवी है ओवर द लास्ट 1 ट्रेडिंग ईयर कहाँ रहा है। ठीक है, 90 के ऊपर है तो हम कहेंगे कि ये थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल से है। तो टाटा स्टील केस में हम लोगों ने कंक्लूड किया कि आईवी के लेवल से कि ये सेलिंग ही हो रहा है। तो आप देखो कि एक पुट के सामने 19 कॉल की सेलिंग हो रही है। दिस इज अ बेयरिश सेटअप। ठीक है, वी कैन गो फॉर अ बेयरिश ट्रेड। थोड़ा एक क्वेश्चन है, क्योंकि फ्राइडे एक हॉलीडे था, तो एक बार देखना होगा कि ये जो सेलिंग है फार फ्रॉम द करंट प्राइस नहीं हो रहा हो, अराउंड द करंट प्राइस हो रहा हो। तो देखो आप इजीली एक इम्बैलेंस ढूंढ सकते हो बाजार में और आप एक ट्रेड बना सकते हो वहां से। राइट, बिल्कुल। तो एक आपने जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि आईवी जो देखना है वो परसेंटाइल में देखना है, और जो ऑप्शन चेन में आईवी आते हैं उसको नहीं देखना। दैट इज द की फोकस, जहां से हम पता लगा पाएंगे कि एक्चुअली दैट इज वन थिंग। यस राइट। सो वंस जब हमने ये इम्बैलेंस जो है वो ट्रैक कर लिया, उसके बाद का स्टेप क्या रहता है? वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। उसके बाद हम टेक्निकल से भी उसको गेज कर सकते हैं, उसको ऑप्शन से भी गेज कर सकते हैं। आप देख लीजिए हाँ, टेक्निकल्स में कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है आपने, है ना। तो एक तो ऑप्शन ट्रेडर को पता है कि वो काफी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, लाइक बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी स्टॉप लॉस की जरूरत है, उसमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि रिस्क डिफाइंड होते हैं। बट अगर आप इस मेथड से स्टॉक को जीरो डाउन कर लिए हो, फ्यूचर में ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा सिस्टम में। वो आप टेक्निकल यूज करके एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हो, एंट्री लेवल्स, एग्जिट लेवल। पर इस मेथड से आपको मालूम चलिए बाजार में काम कहाँ हो रहा है, बड़ा काम कहाँ हो रहा है। सो यू जस्ट कॉपिंग द बिग पीपल्स। Okay, so any message for FY24? Sir, you know what? This is I was in Kolkata just 2 days back for an event. I met a lot of a real trader who are into the market for the last 10 years or little more than 10 years. ये time है see अपना बाजार भी थोड़े से see we are in a global village. We cannot be completely decoupled from the global events and अगर दूसरे गांव में आग लगती तो गांव आग पहुंचेगा। तो we have to preserve the money what we have made unless the whole uncertainty around the globe settle down. So preserve what we have made. Well, that's all for now, but do stay log on to etmarkets.com for more on news, business and economy. Again, thank you so much for your time, Rajesh.